Hello, today we are going to solve examples based on moment of a force, equivalent force couple system, and coplanar non-concurrent forces. In the previous video, I had taught you the Verignin's principle of moment, what is moment and what is couple. And today we'll be solving the examples. So if you have not seen that video, I'll suggest you watch that video first and then go for the examples. Let's get started. For this question, we need to find the moment about the center of the square. Let's see how we can find this moment about the center of the square. Here we are having four forces: 100 Newton, 250 Newton, 150 Newton and 300 Newton. अभी जैसे कि हमारा 250 न्यूटन वाला फोर्स है, तो वहाँ पे अगर मैं थंब रखती हूँ ए पे और फिंगर्स मैं फ्रीली रोटेट कर रही हूँ टूवर्ड्स ओ, तो मेरी जो फिंगर्स है राइट साइड पे वो घूम रही है. इसका मतलब होगा कि दिस इज़ क्लॉकवाइज मोमेंट. या तो फिर आप एक पेंसिल ले सकते हैं एंड जैसे मैंने ये ड्रॉ किया अभी 250 न्यूटन से लेके मैं ओ पे लेके आई अपने एरो को, वैसे ही यू कैन डू इट. तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि दिस इज़ क्लॉकवाइज मोमेंट, और क्लॉकवाइज मोमेंट है तो उसकी साइन पॉजिटिव आएगी. एंड वी नो दैट मोमेंट इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहाँ पे है फोर्स हमारा 250 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगा वो होगा हाफ ऑफ दिस, क्योंकि हम ओ तक फाइंड कर रहे हैं, मतलब सेंटर पे फाइंड कर रहे हैं. तो हाफ ऑफ 5 मीटर इट विल बी 2.5 मीटर. फर्स्ट वन विल बी 250 इंटू 2.5. अभी हम हमारे दूसरे फोर्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि ये है 100 न्यूटन फोर्स. अभी यहाँ पे जैसे मैंने ये ड्रॉ कर लिया, 100 न्यूटन का एरो बार की तरफ है, उसे मुझे लाना है ओ पे. तो ये जो डायरेक्शन हो गया वो मेरा हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज के लिए साइन नेगेटिव होगी. अगर आपको ये पेंसिल से नहीं करना है देन यू कैन यूज़ द थंब रूल. लाइक फिंगर्स के इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे 100 न्यूटन के लिए जो फिंगर्स होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है. दैट्स वाई इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. बट आई प्रेफर दैट ड्राइंग इट विद अ पेंसिल इज़ वेरी मच सिंपल. और फिर एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो फिर तो पेंसिल से ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. डायरेक्टली यू विल बी एबल टू मेक आउट वेदर इट इज़ क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. सो राइटिंग फॉर 100 न्यूटन इट विल बी -100 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच विल बी 5/2, दैट इज़ 2.5 मीटर. -100 इंटू 2.5. Now let's see the direction for 150 न्यूटन. तो ऐसे करके मेरी मोमेंट लगेगी, तो ये हो जाएगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. -150 इंटू अगेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस which will be 5/2, that is 2.5. एंड देन टॉकिंग अबाउट 300 न्यूटन, तो उसका मैं ऐसे डायरेक्शन में लेके जाऊंगी. तो ये हो गई हमारी क्लॉकवाइज मोमेंट. सो इट विल बी पॉजिटिव 300 इंटू 2.5. पेपर में आपको ये सब डायरेक्शंस नहीं दिखाने हैं. सो वंस यू हैव फाउंड आउट द मोमेंट, just erase all those directions that you would have drawn with a pencil, and if you are comfortable with the thumb rule then that's well and good. So here moment about the center of the square will be equal to 750 Newton meter, and as we have got positive sign for moment, this means that it is clockwise moment. Let's solve another question. Here we'll find the moment of force about A. Here we need to find the moment about A. First of all, let's see for this first force which is 600 Newton. जब हम 600 न्यूटन से A की तरफ जाएंगे then it's clear that this is clockwise moment. I'll write it as MA is equal to क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव होगी, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव होगी. 600 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज़ 200 mm
so it will be 600 into 200. नेक्स्ट फोर्स देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट फोर्स विच इज़ 500 न्यूटन. बट ये हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे, हमें इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ढूंढना पड़ेगा. सो दिस विल बी 500 cos theta and this will be 500 sin theta. क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है. It is given that tan theta is equal to 3/4. This way, given in the question to us, that we'll be using and we'll find theta. Therefore, tan theta is equal to 3/4, which is 0.75, and theta will be equal to tan inverse of 0.75. Therefore, we get theta equal to 36.87 डिग्री. ये जो 500 cos theta है वो एक ही लाइन में लग रहा है, therefore it won't produce any moment. Talking about this 500 sin theta, let's see the direction. I'm just drawing it here this way. इसका मतलब है कि this is clockwise moment and this is the perpendicular distance which is 400 plus 200, so it will be 500 sin theta. Sign will be positive because this is a clockwise moment. Theta is 36.87 into the perpendicular distances, as I told you, it will be 600, which is 400 plus 200. Then we have another force, which is this 200 Newton. Again, we'll resolve it in two components. Here, the adjacent to theta will be 200 cos theta, which is 200 cos 30, and this will be 200 sin 30. Let's see the directions. फर्स्ट ऑफ ऑल 200 cos 30 के लिए देख लेते हैं. तो ऐसे करके मैं गई ए पे, तो ये हो गया मेरा क्लॉकवाइज मोमेंट, और 200 sin 30 के लिए ऐसे होगा, तो दिस विल बी माई एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. सिंपल. क्लॉकवाइज मोमेंट जो है हमारी, उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 200 mm, और ये जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उसके लिए ये डिस्टेंस होगा विच इज़ 400 प्लस 200, दैट इज़ 600 mm. तो 200 cos 30 के लिए पॉजिटिव साइन आएगी बिकॉज इट इज़ क्लॉकवाइज मोमेंट, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज़ 200 mm. देन 200 sin 30 एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, सो माइनस साइन आएगी, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज़ 200 प्लस 400, दैट इज़ 600. और ये जो 500 न्यूटन का फोर्स है उसे जब हम ए पे लगाएंगे तो वो ऐसे लगेगा. इसका मतलब हो जाता है ये हुई हमारी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंड दिस विल बी एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज़ 200 mm minus 500 into 200. On solving this, we'll get moment at A equal to 174,641.42 Newton mm. If I want it in Newton meter, then I'll have to divide it by 1000. So it will be 174.641 Newton meter. Now let's see next question. This is based on equivalent force couple system. The question asked is, replace the forces acting on the rod by an equivalent single resultant force and couple system acting at point A. मतलब हमें resultant force भी ढूंढना है और moment भी ढूंढनी है. This 500 Newton force will resolve it in two components. This component is 500 sin 45, and the horizontal component will be 500 cos 45. The arrow is inward, so we'll also have inward arrows for both of the components. Now we'll find sigma V and sigma H. Here the horizontal forces, as I can see, this is 200 Newton force and this 500 cos 45 are my horizontal forces.
200 प्लस 500 cos 45. यहाँ पे दोनों ही बैकवर्ड एरो है, so it will be minus, but instead of showing that sign हम लोग एरो की डायरेक्शन दिखा देंगे. So sigma h will be equal to 553.55 Newton, and here showing this way the direction of the arrow. सिग्मा वी की बात कर लेते हैं. तो सिग्मा वी के लिए वर्टिकल फोर्सेस जो है वो 700 न्यूटन, दिस 500 sin 45, it will be 700 plus 500 sin 45. अगेन डाउनवर्ड एरोज है तो माइनस साइन विल कम, बट इंस्टेड ऑफ शोइंग द साइन हम लोग एरो की डायरेक्शन दिखा देंगे. दिस विल बी इक्वल टू 1053.55 न्यूटन downward arrow. Now to find the resultant force, we are having the equation which is R is equal to under root of sigma h square plus sigma v square. From this we'll get our resultant force equal to under root of 553.55 whole square plus 1053.55 whole square, and this comes out to be 1190.12 Newton. So we have got our resultant force. Let's also find the direction of the resultant force. For that we have tan theta equal to sigma v upon sigma h, and sigma v is 1053.55, sigma h is 553.55. This is equal to 1.903, and theta will be equal to tan inverse of 1.903, which is equal to 62.28 degree. And one thing we are having, which is sigma v and sigma h both are negative. That means that the resultant will lie in the third quadrant. Here we'll write it that sigma h and sigma v both are negative. Therefore the resultant will lie in the third quadrant. Here the resultant will be there. This is my theta. Here let me just write this. The horizontal force, summation of the horizontal forces that we have got, which is 553.55, and summation of the vertical forces, which I'll write it here, 1053.55. The resultant force that we got is 1190.12. Now we'll find moment about A. First of all ये 700 न्यूटन ऐसे लगेगा A पे. इसका मतलब होता है this is clockwise moment and this will be the perpendicular distance. So 700 into 0.5 MA is equal to, then 200 न्यूटन फोर्स की अगर बात करें तो वो एक ही लाइन में लग रहा है. Therefore it won't produce any moment. Then the next force that we are having is 500 sin 45 and 500 cos 45. अभी जैसे 500 sin 45 की डायरेक्शन ऐसी होगी, दिस मीन्स क्लॉकवाइज मोमेंट, और ये हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5 मीटर प्लस 0.5 मीटर, मतलब टोटल हो गया 1 मीटर, और साइन पॉजिटिव आएगी बिकॉज इट इज़ क्लॉकवाइज मोमेंट. So I'll write it as plus 500 sin 45 into 1. Then we have 500 cos 45. तो ऐसी डायरेक्शन में लगेगा. Again this will be clockwise moment. So we'll have positive sign plus 500 cos 45 into perpendicular distance कितना हो जाएगा,
ये होगा हमारा perpendicular distance 0.4 meter. So it will be 500 cos 45 into 0.4. And finally, when we'll solve this, we'll get MA, which is equal to 844.97 Newton meter. Moment is positive, so this is clockwise moment. Finally, we'll draw a diagram in which we'll represent the resultant force and the moment about A. So the resultant force, which we have got it as 1190.12 Newton. This is the equivalent force couple system. Here this is theta, and this way I'll just show the moment, which we have got it equal to 844.97 Newton meter. This way you can solve the examples based on the equivalent force couple system. First of all, we found sigma h, then sigma v, then the resultant force, and then finally we found the moment about A. And the last diagram that we have drawn, that is the equivalent force couple system. Let's solve another example. Here we need to determine the resultant magnitude, direction and location with respect to center of the circle. The radius given to us is 3 meter. This is the diagram along with the forces. First step will be to determine the summation of the horizontal forces. 150 Newton, which is this one, is horizontal force. Then this 100 Newton, I'll have to resolve it in two components. It is acting like this. Here the angle is 45 degree. So this will be 100 cos 45 and this will be 100 sin 45. Then from this, horizontal force is 100 cos 45. Now 150 is forward arrow and 100 cos 45 is backward arrow. So we'll have to use the signs. 150 minus 100 cos 45, which comes as 79.29 Newton. And this is positive, so it will have a forward arrow. Sigma V is equal to, talking about the vertical forces, 80 Newton, this 50 Newton, then this 100 sin 45. 80 Newton and 100 sin 45 are having downward arrow and 50 Newton has upward arrow. So it will be 50 minus 80 minus 100 sin 45, which is equal to minus 100.71 Newton. That is, downward arrow will come. Don't get confused between the previous example and this example. वहाँ पे जो दोनों ही forces की signs थी वो same थी, इसलिए हमने वैसे consider किया था. यहाँ पे it's different, so we'll have to consider it like this. Now we have the resultant force, which is sigma h whole square plus sigma v whole square under root equal to 79.29 whole square plus minus 100.71 whole square root of this. Therefore R is equal to 128.18 Newton. We have found the resultant force. Now we'll find the direction of the resultant force, which will be tan alpha is equal to sigma v upon sigma h. And mode of sigma v upon sigma h, therefore tan alpha is equal to 100.71 upon 79.29. As that is mode, it will become positive. Therefore it's equal to 1.27. Alpha is equal to tan inverse of 1.27.
So we get alpha equal to 51.78 degree. Here we need to find the location of the resultant with respect to the center of the circle. Now let me just show you that. In the diagram I have drawn this vertical line. This angle is 90 degree and here this is my x. This vertical line, which is my resultant force. This x is the perpendicular distance at which my resultant lies from the center of the circle. And in order to find x, we'll have to consider moments. Before that, let's determine the quadrant where the resultant lies. H is positive, sigma h is positive, and sigma v is negative. Therefore, the resultant will lie in the fourth quadrant. अभी यहाँ पे हम लोग मोमेंट लेंगे अबाउट द पॉइंट O, but instead of writing MO, we are having the resultant force and its perpendicular distance. So we'll be considering that R into perpendicular distance. Perpendicular distance है हमारा X. ये 100 न्यूटन से ये जो जा रहा है O की तरफ वो है हमारी clockwise moment. So it will be 100 into the radius. That will be my perpendicular distance. So 100 into 3. Then 80 से ये जो गया वो मेरा हो गया था एंटी क्लॉकवाइज. सो यहाँ पे मैं माइनस साइन कंसिडर करूँगी. जो भी पॉजिटिव साइंस है वही राइट हैंड साइड पे हम पॉजिटिव लिखेंगे. अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो वो नेगेटिव होगी. अब ये 50 न्यूटन से ऐसे गया तो वो हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. अगेन -50 इंटू 3. और ये 150 न्यूटन से ऐसे जा रहा है. ये होगी मेरी क्लॉकवाइज मोमेंट. सो दिस विल बी प्लस 150 into 3. Why 3? Because 3 is the radius which is given to us. Now R we have already found, which is 128.18 into x is equal to 360, and x will be equal to 360 upon 128.18, which is equal to 2.81 meter. So we can say that the resultant is at a distance, perpendicular distance of 2.81 meter from O. This is how you can solve this type of example, in which we need to find the resultant, its direction and the location with respect to the center of the circle. अभी हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी टाइप का, बट ये जो एग्जाम्पल मैं सॉल्व करूँगी उसमें हमारे पास रिजल्टेंट ऑलरेडी गिवन है. अगर रिजल्टेंट ऑलरेडी गिवन है तो जो पहले के जो स्टेप्स थे, विच इज सिग्मा एच, सिग्मा वी, एंड देन वी फाउंड द रिजल्टेंट फोर्स, दैट वी डोंट नीड टू परफॉर्म फॉर दिस एग्जाम्पल. डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे मोमेंट से. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिजॉल्विंग दिस 75 न्यूटन फोर्स इन टू कॉम्पोनेंट्स. दिस इज माई 75 cos 35, angle is 35 degree, and vertical component is 75 sin 35 degree. And then after we'll see the directions. Also we have this force 50 Newton. We'll need to resolve it. 50 cos 45, and the vertical component will be 50 sin 45. अब ये जो 50 cos 45 है वो एक ही लाइन में है. इसका मतलब it won't produce any moment. Then let's see the direction for 50 sin 45. The direction will be like this. This is clockwise moment, and this is the perpendicular distance, which is 150 mm. So it will be 50 sin 45. First of all, I'll need to write this r into x. X क्या है? तो x indicates the perpendicular distance between my resultant force from the point A. So we have r into x is equal to 50 sin 45 into 150. For 20 Newton, this will be the direction. Again, it is clockwise moment.
the perpendicular distance will be 175 plus 150. So plus 20 into 325. Then we have the 75 cos 35. The direction will be like this. Again, clockwise moment. So it will be, and this is the perpendicular distance, which is 50 mm, plus 75 cos 35 into 50. And then we have 75 sin 35. As you can see it, this is the direction. It is anti-clockwise moment. So it will have negative sign, minus 75 sin 35 into the perpendicular distance, which is 175 plus 150 mm, that is 325 mm. On solving this right hand side, we get r into x is equal to 894.18. We already know the value of r, so it will be x is equal to 894.18 upon 28.5, which is equal to 31.37 mm. So these were the examples based on the coplanar non-concurrent forces. You will be asked to find the moment of force, or you need to find the resultant force, its magnitude, the location at which the resultant lies from a particular point about which you need to find the moment. While solving other examples, if you have any doubt, then you can mail me your doubt on my mail ID. It is civilengineering@gmail.com. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.